Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hello, sir. Hello. Carry on. हम just Sir, लिखने के लिए फोन. हाँ. Okay. start. Rishi, Okay. carry on. Yeah, okay, sir. हाँ. So I'll talk in English and Hindi. That's comfortable for you, right? Yes. Yeah. Okay, great. So I want to make it a slightly interactive session. And as a startup, I understand that we should have less of GAN session and more about how to grow ourselves, right? So I have been in this ecosystem for almost 7 years. Before that, I'm from Bihar itself. If you know, there is a district by the name Muzaffarpur, and there is a village by the name Maricha near Baghi. Yeah. So I'm basically from there, but I did my engineering from NIT Bhopal in electronics. I passed out in 2004. Then I worked for 3 years in Delhi, and then I did my MBA from KJ Sumaya. And then I worked in companies like Idea, Nokia, Microsoft, and Exceed. So before starting my startup, I was a regional manager managing devices initially, and then after that, I was part of a school ecosystem where I was trying to improve the education system before taking this leap. So, very passionate about health and education, like two sectors. So we started a company by the name XTRALIVING, and now I wear only this T-shirt with the branding of XTRALIVIng. So एक्स्ट्रा लिविंग हमने जो स्टार्ट किया था, हमने ये सोच के स्टार्ट किया था जो हम ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करेंगे. और मैंने स्टार्ट भी इसीलिए किया था क्योंकि जब मैं कॉलेज स्कूल में था या फिर कॉलेज में था या फिर जॉब में जब गया, तो जब मैं जॉब में था उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया जो जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. हेल्थ इश्यूज, किसी के घर में डायबिटीज़ है, किसी के घर में जॉइंट इश्यूज है. तो वो एक जनरल नॉर्म बन गया था. And when I was traveling for work, any country like Europe, US, or any country, I used to meet experts, as in health experts, performance experts, just to understand what is the way to improve our health. So after meeting a lot of people, after meeting some really good doctors in Howard Medical College and some sports scientists, I realized that the solution is very simple for health. With that in mind, I thought that, okay, fine, I should start something of my own. At least that is my calling. Before it is very late, I should start doing something. And that innovation is always there in most of our heads. सबके दिमाग में रहता है जो हाँ कुछ करना है. Majority people cannot take the leap when they feel they don't have the comfort of quitting a job, or maybe the financial situation is bad, or maybe many people are not risk takers. So I took a leap. I started a fitness center, and those days I didn't have a very well-informed system to understand how to start a business. Like how even now, like many of us are not fortunate, and especially for people from this region. Especially my father was a teacher, so the beliefs that we had was more around educating people, help karna, and then business was supposed to consider very wrong, and those are the value systems that we grew up with. So business was always risky, and we always thought that people who are driven by profit are not very good people, and that's a very harsh truth. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे लगा जो जो भी फंड्स है मुझे ही डालना है, तो आई इन्वेस्टेड माय एंटायर सेविंग्स. ओके, so I started a company and invested my 1.5 CR that I so that I did, and it worked really well. So we started with some performance center. We started working with government of Maharashtra, government of Telangana. We started training some Olympic athletes. I started training some of the athletes myself. I did my certification. So apart from the educational qualification, I did my certifications in fitness, health, and nutrition from US, Canada, and Thailand. So those are the three places where we do a lot of performance training. तो ये करने के बाद हमने ऑफलाइन ब्रांचेस स्टार्ट किए कुछ सिटीज़ में, कुछ फूड प्रोडक्ट्स में कुछ रिसर्च हमने स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड वर्किंग विद सम ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक CFTRI,
we started collaborating with some of the management colleges. So we helped the college where I did my MBA. We started new MBA program, which was in sports. So very driven by performance and sports. So we started building that culture. We did a campaign with the government of Maharashtra where we reached out to 1 lakh schools, and there were roughly 24 million students part of the campaign. So that was really good, and it was appreciated by government of India. They started a national campaign after that with Akshay Kumar through Fit India movement. So they started. I was part of the planning team where we planned how to do that in multiple districts and in multiple regions. So that gave us an idea, understanding of what the situation is. So उसमें हमने देखा जो हमने assessment किया, we have an understanding of movement, and most of the problems that we are facing these days is because of the lack of movement and nutrition. So we have an idea of what how to assess movement. कैसे हम अगर 2-4 movement है जो लोगों को हम अगर बोले तो हम predict कर सकते हैं if he'll have some joint issues or not over a period of time. So we did that with students. 35,000 students were there across Maharashtra in this campaign, and more than 90% of them had issues. So मतलब ये है जो 5 साल बाद या 10 साल बाद they will have issues, and the situation is changing, the entire lifestyle is changing. So with that in mind, we started investing in technology. We work with IIIT in developing some deep tech system to understand movement through computer vision and IoT devices. So we are in the process of building that right now, and we started exploring the medical education field. So all of these things we are doing, and to someone who's a third person, उनको लगेगा जो यार ये कुछ भी कर रहा है, कभी ये कभी वो कभी, और that is how most of you would be doing, right? And that is a sad reality where innovation, right? Innovation, people connect innovation with success all the time. Like, अगर what आपको is your core business? Like, I did not understand. Like, Yes, so very fair. Many people don't understand. So it's good that you pointed out. So we started with the main objective of improving human performance. And to do that, we realized there are 3 aspects. One is movement, nutrition, and recovery. And we invested deeply in movement. Okay, so right now we had some offline centers where we help people improve performance by doing some physical exercise. There are some rehab exercise that people do when consultation with physical therapists or doctors. So we can help people. Like if all of you are there, and if I have to improve your performance, I'll start with an assessment. एक मैं आपको check करूँगा जो आपका assessment में problem क्या है, and then we'll give you the right kind of exercise that you should be doing. We don't believe in shortcuts like giving supplements or any tech solution which is not foolproof. So that is the core line of business. We train all kind of people. We train regular individuals, and we train athletes also. So that is, training is one core field that we have. kind of exercise. Yes, yeah. So, and in that only we are developing technology to streamline training. अभी क्या हो रहा है जो अगर मैं How is related to that Yes. physical training compared So to- you see, I mean, when I ask people to exercise, the first thing that will come to their mind is the bodybuilding exercise that is being done. तो आपको दिमाग में आएगा सलमान खान, आमिर खान. Exercise में मतलब वही maximum time दिमाग में वही जाता है. And then you will feel that वो हमारे लिए थोड़ी ना, वो It's तो depend उनके लिए. person to person. Yeah, no measure. Yeah, so you are an intelligent crowd, so you will understand. But there are many people who will just connect with muscle building exercise. So finding the right person is a big problem. Like if today you go out in the market and tell people that you want to improve your health and you need some exercise, there will be very limited number of people who will understand movement. And that is the reality in the big cities also, including the core of Mumbai, Bangalore, or Hyderabad also. So, and it all it depends on the trainer who is there with you, right? So that he will be able to guide you, or he'll not be able to give you the right kind of information. So technology plays a very crucial role. Human movement is basically physics, how you are moving your body. And there are some right ways in which you can move your body. And if the movement is not happening properly, then maybe there is some problem with your joints. It is as simple as that.
Now you connect that with computer vision, right? It's very easy to use computer vision to understand how your body is moving and how much deviation it is from the normal. If we are able to build that, then you don't need a very high quality trainer, or the entire thing can be solved by use of technology itself. If you integrate AI, you understand the problem, you ask someone to move in a particular way, you understand the problem, and based on those problems, you can conduct the solutions. So it is, if we are able to do what we are thinking, then the entire technology bit, the platform, will be able to solve your problem. It is just that the intent should be there. आपको ये रहना होगा जो हाँ आपको कुछ करना है. अगर आपको करना ही नहीं है तो फिर this solution doesn't work. Every exercise main portion is important, like deadlift लगाते हैं तो portion जो वो important रहता है, तो वो टेक्नोलॉजी से हम कैसे समझ पाएंगे, तो एक देखना तो चाहिए. एक्चुअली क्या होता है ना, पहले अगर हम देखें ह्यूमन मूवमेंट को, तो डेडलिफ्ट एक टाइप का एक्सरसाइज है. देयर आर 7 फाउंडेशनल मूवमेंट. थोड़ा से पोर्शन इधर होता है तो बैक में पेन आया था आपको. हाँ, so there is a very structured way to plan and deadlift. Dangerous exercise. Yeah, it's not a dangerous exercise. It's just that the people don't understand how to scale it up properly. Okay, everyone does deadlift. All of us do that on a daily basis. Whatever you lift from the floor is deadlift. Okay, it's just that you either do it in a wrong way with less load, then it doesn't affect your lower back. Okay, but if you increase the load, then it will affect. So the technology will be able to understand the core of the problem. If someone is doing wrong posture, then there is a likelihood that he has some issues with the joints. And there are 3 major joints, which is shoulder, hip, and ankle. So we work with physical therapists and few doctors who and we understand movement and they understand the other problems that is associated with the human body. So Like- together we are trying to Like I'm a patient and I have a joint pains. Yes. So how will I connect with you and how will you help me to recover that? So there are certain structured program that is generally there. Let's say there are many people who have knee pain, or there are many people who have shoulder pain. So if you have a knee pain, then we understand that there is a problem with your joint, either in your hip and ankle. So there are some basic exercises that is there to help you release the muscle and then to build the strength of the muscle around your joints. Okay. First, how will I connect with you? Or how will you help me through So apps, yes, or no. I will So have we to have come to your center? we have our offline centers right now, which is there in Hyderabad. We have our presence in Pune. We have our presence in Mumbai. We don't have our own center everywhere, but we are connected to the academies. Okay, so there are some sports academy where people have the setup. Okay, so right now we ask them to come. Now that is the gap which we are trying to reduce with this technology, right? So once we have a screening methodology, and let's say I put a screening device that we are building here, and we ask people to do a screening, and we are trying to do that in schools and places where there are more number of people, like corporate parks and all, where there are 30,000-40,000 people who are working. So those who can do some basic movement, we will be able to understand the problem, and the solution can be online also. Okay, so then we can help you connect with the right physical therapist, and we can tell the physical therapist what kind of movement they should be giving them. So not all physical therapists are all great, right? I mean, So you onboard physical therapist also? yes, yeah. So for us, understanding a problem and then giving them a solution is the entire solution, right? So if there are people who come to our center, we train them, we help them get better. Those who cannot come to the center, there are offline setups that is possible. But that is phase 1. The phase 2 is completely, we are trying to add the power of AI, where the screening and the solution can happen at the same time. So when I was talking about innovation part, right, like how you got confused, I'm trying to do multiple things. Yeah. Suppose somebody comes to you, Yes. your center. Yes. So what is the first step? Do the assessment manually, or you have a checklist, or you use that checklist to do the assessment physical? So what we have realized, people who are experienced, they, even though they don't understand the process, but in their mind they understand movement very flawlessly. So we do an assessment for them. Okay.
We set a protocol. Like, let's say if I am doing an assessment, I'll have certain things in my mind, and out of 10 things, I'll remember 10. But when we onboard new people, then what happens is like they don't understand the entire assessment tool. So we give them some of the mandatory movement that should be done. Okay. So we develop a manual, a process is designed so that anyone who is coming for the first time also can do a basic checklist and help them help us know their problem. And then after that, the solution is basically dependent on the joint that they're having an issue. Like we have done assessment for some of the Olympic athletes, and then we realize that their performance is really good. काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसके बाद हमें लगता है जो हाँ जब हम असेसमेंट करते हैं तो उनका एंकल में या हिप मोबिलिटी में प्रॉब्लम रहता है. When we improve that, then their performance improves by 30 to 40%. Just by like why physical therapist will connect you, क्योंकि उनका तो खुद का अपना सेंटर्स होता ही है, एंड सेट ऑफ उनका तो खुद का ही है कि हाँ नी जॉइंट्स है तो किस तरह से एक्सरसाइज करवाना है, किस तरह से, उनका तो ऑलरेडी ही होता है क्योंकि दे ऑल हैव स्टडीज दिस की किस तरह से एक्सरसाइज वगैरह का. देन व्हाई विल कनेक्ट विथ यू, दे विल से कि खुद का सेंटर्स है. ये जरूरी नहीं होता है, वो लोग होम हो रहते हैं अभी या फिर कनेक्ट करते हो बस ये चीज, ये भी अभी क्या हो रहा है ना, काफी ये जो जिस रेट पे बढ़ रहा है, नी पेन, लोअर बैक पेन या नेक पेन, the number of physical therapists are less and it is very unstructured. Even now you will know at least just 10 to 15 physical therapists in a particular area who are good, but the problems is huge. It's huge. And the physical therapists who are there in the system right now, they just rely on the basic equipment which is for pain relief. They don't do physical therapy. They just do pain management. So there is a big gap. And this is something which I have seen across. Today also, you just go to a physiotherapy center or physical therapy center. What they will do is just pain relief. They'll not do physical therapy. And they only give you 5 to 10 minutes. और एक हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर में ना वो लोग 10 से 20 पेशेंट्स को एक बार में देखते हैं, वो टाइम नहीं देते हैं. Yeah. And how is this different from this pain relief versus this physiotherapy? Say for example, being a patient, Physical therapy, not physical therapy, let's take an example. So if I am suffering from a pain, obviously my focus will be okay, how should I get cured? So the explaining the difference between ki I am getting pain relief versus this. So pain is just your body's way to tell you that there is a problem. Okay, it is just transmitting that information to your brain and you are getting that pain, right? Now you will apply some pain relief or you will apply something to just numb that pain, right? But you're not solving the problem. It's a recurring problem. Okay, and that is where the problem is happening. In many cases, people go to a physiotherapy or a physical therapist for 10 sessions, then continue with their life, then again they go. So it's something which keeps repeating, and the awareness level is very less right now, and that is where there is another opportunity. Right now, when we talk to people at mass, they don't understand the difference between pain relief and physical therapy. So that means our market is limited right now, but then people are getting more and more aware. Nutrition के बारे में आप आजकल लोगों को जितना पता है 10 साल पहले उससे काफी कम पता था. That is where we are investing. And it's not that people, the physiotherapist or the physical therapist don't have a business, right? They already have a business, but the opportunity is huge. Plus, there is no standardization right now. So that is why we are investing in technology. And here in Patna, if somebody wants to, as you mentioned that you are connected with many academy, I believe. Yes. So which are those in Patna? No, we haven't done anything in Patna right now. Yeah. So we have worked primarily in Mumbai, Pune, Hyderabad, and some parts in Bangalore. So our main focus is in these 3 cities. And without using technology, we will not be able to manage. You are from the Bihar. Yes. We don't choose first Bihar. Okay, so this is something that I wanted to talk in the last, but I'll talk about it right now. See, I met a lot of people outside, the medical experts, including doctors in Harvard. I spent 15 days there. I talked to some of the Russian scientists who are in human performance. When they were talking about nutrition, lifestyle, and the products that is good for performance,
A lot of those things are from Bihar. Okay. The lifestyle, which was there earlier, it is very pro performance. Okay. When we started training people, we started telling them a lot of things that we used to get here for them to consume. Okay. So product is very strong here, but the market is not Bihar. Okay. So now the market which needs our kind of product is basically the metros. Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore. And that is where there has to be a slightly different way of addressing the market. Now we know about product market fit, right? We know. So one of my intention to talk to you guys was to understand your product and then understand what are the opportunities which is there for you outside. Okay. So if I am only in Hyderabad, then I see everything which is around my place itself, right? But when I go to Mumbai, I see a different vibe. Okay. So that gives me a different perspective. Now, there are some products which is here. If you get the right platform in these metros, then you will do better. It is just that your branding and marketing has to be different, right? और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रांडिंग और मार्केटिंग का है वो उस कस्टमर बेस के लिए है. I'll tell you, we started our center, the first center, and we charged 10,000 per month as a fitness center. And people used to pay, and we had zero discount. It is just that we did good branding and we had good people. So the overall branding and marketing plays a very important role in those markets. Okay. So the packaging, the cost of the product might be 2 rupees, and your branding and marketing cost can be 8 rupees, and then you sell for 15, 20 rupees. Okay. So that is where I think product from Bihar can do much better in terms of the opportunities. And I feel opportunity not just these metros, बाहर और ज़्यादा है. जैसे आज मैं बात कर रहा था इनसे, when we started our center in 2017, हम लोग सत्तू ड्रिंक देते थे लोगों को, and we used to sell them at 200 rupees one drink. Okay. And that sattu, everyone knows it is very good for health. And in Bihar, we take it for granted. But if you give the same drink in a proper way in one of these metros, in other countries, people understand the health benefit. You have more takers there, and they pay a premium. So at least I understand about food sector. I'll talk to you about the other sectors also that you guys are in, and we'll try to understand what are the opportunities which is there in other cities. So that is one of my intention. But yeah, I wanted to have an interactive session to understand what you guys are doing, and then we can have a meaningful discussion around. One question. Yeah. As you mentioned that obviously you have been doing from metro cities like Mumbai, Yes. Pune. Obviously those are cities you might have thought, okay, I will get business from there and it's going on. So what do you feel in next how many years people from Bihar will be your customers? I don't know. It 3 is. years, 5 years down the line. It can be earlier also. Right now also. That's No. Now, right now also the purchasing power is there. I'm not saying that the purchasing power is not there. It is very easy for us to manage those 3 cities geographically. Okay. Now, the one is the geography part of it. If I start something in Patna and if I am not physically present a couple of times in a week, then it will not work. Okay. So I don't want to spread myself too thin. So I want to focus on 3 cities, and it is by the geography itself is huge there. Right. So I'll not be able to, unless I get to a different scale in second stage or third stage, definitely the other cities, which is slightly far, will be able to manage, but not right now. So I want to understand about your sector also a little bit. What are you into? Like Kritha Tutor, as I wear the t-shirt, this hoodie. Okay. So it's basically a personalized tutoring platform. Okay. We connect the tutors through our platform. Okay. For KG to 12 group, as well as we connect faculties for the schools or educational organizations as well. Okay. So it's for now operationally 3 different cities like Kolkata, Patna, and Darbhanga, and hopefully in coming future we'll expand across India as well. Okay. In international market as well. Awesome. What about you, sir? Yeah. So my name is Ajay Kumar. Basically, I will start out in both India.
Basically, we are working on the natural products. Okay. Yeah, from the because a lot right now pollution is increasing day by day, and our skin is basically outside of the suffering from the lot of pollution and causing lots of diseases as well as some uh, cosmetic product which is available in the market chemical based. It's hurting our skin. So our startup is organic product and so with this type of issue. Okay. Okay. Great. What about you? My name is Rajat Yasri. So my brand name is Blue Drinks. We offer flavored drinks with 0 calories, 0 sugar. So our main objective is to helping individuals to consume more water, and basically we filling the gap between sugary beverages and packaged drinking water. So right now we are on the MVP stage, and soon we will be operational in metro cities. Okay. Myself is KUMAR. I'm founder of Enzac Organics. Basically, we are working with honey and its allied products, just like honey and its products like basic dry fruits mixed honey and sugar-free products like bee pollen. And also, we are working with other type of beauty products with honey. So naturally, normally we are working with the different quantity type of honey right now, and we are working with the infusion of honey also. And just like I told you that why you don't choose Bihar, I have the same problem because honey consumption is honey in Bihar is very less currently, and currently our market is the western belt like Karnataka, Maharashtra, Gujarat. Okay. The main market. Okay. My name is KUMAR, and I'm related with the educational sector. And my concept is providing the mentors for the mentee. The platform is made the mentor. Okay. We are doing activities in school, colleges, and university. Okay. So your customers are the students. Okay. Yeah. What about you? My name is Suraj Kumar. We currently working on the pets industry. I founder of animalslover.com, where the customer easily take pets. We have the top ranking breeders around all over, about 10 to 15 top ranking breeders currently operate in Bangalore, and next few months I will try to operate in Delhi also. Okay. Okay. Great. What about you? My name is Aryan. I have also completed my B.Tech in electrical electronics. My company is, we provide software suits for AI software suite, which help MSMEs and startups to grow, like accounting, corporate sales, HR. Okay. Okay. Great. What about you? My name is Ajit Kumar. I'm running a company called STEM. I am building a software. That software is a enterprise search. Say today, Google has already captured the market. They have search engine. So every individual, whoever have any question, blindly asking anyone, they will straightforward go to Google and ask the question. Say one question. So I'm building a similar application, but that is for enterprise. It means if I'm selling this product to any customer or Wipro, take example. So every employee of Wipro, rather asking any question to any other employee, straight they will ask the question on my platform related to anything about the Wipro. Either your salary, your payroll, your leave, your working, your customer, your issues, your knowledge, anything, whatever you have in your brain. Let's say, for example, today I want to know what is the price of this mic. I'll ask the Google. Same thing. When I'm working in a company, I have many questions which I ask to any other person. How to solve this problem? How is it solve it? When I'm working, obviously many questions. Simple for anyone. So, मेरा बस simple agenda. Whatever the question you have in your organization, ask to the application rather to a human being. Amazing. Great. But one question actually, Okay. as you mentioned earlier that you have been doing with the other states, do you feel that I will be able to achieve this impact at the beginning of my first 10 customers? Yeah, definitely. Why not? As in now, I think the bridge has been removed. अभी पहले जो था एक बड़ा गैप था टेक्नोलॉजी का. With AI, I think the gap has reduced a lot. And wherever I go, I
talk about, so I'm involved with the AI platform for some of the products. And I tell people that places like Patna and other similar cities have a huge potential right now. पहले लैंग्वेज बैरियर था, वो अब हट गया है इससे, है ना? अभी जो आप जो सोच सकते हो, ठीक है, यू कैन मूव वेरी फास्ट. That communication gap can be removed by using some of the tools that you will have in the market. It is just that your market connect. Now, as entrepreneur, if you feel that in Patna or any city, if your market, if your end goal, right, is to sell to corporates, and if you don't have the right corporate, if you don't have one or two right corporate also in Patna, then reach out to the other cities. But if you have, then it is better to test it out with them. Like you, right now, you are at a stage where you're trying to find your product market fit, right? Huh? So then you talk to them. But I think the platform that you are talking about, it has huge scale, and people have to back you up, right? A lot of people have to back you up. So people who will back you up, that I don't know how many people will be there in Patna. Okay, like let's say in Bangalore, a lot of people who will understand this, right? So you will definitely need a lot of investment, whether you do it by yourself or you raise. And if you get people here who can back you up, then you can move faster. But maybe it'll be a good idea to explore other ecosystem also. If you feel that people here are moving a little bit slow in terms of supporting, then you can reach out. And we reach out to multiple ecosystem like Mumbai, Chennai, Bangalore. We talk to people. So you should get connected. What about you? My name is Rajnikant Pandey. I'm the founder of Pushpanjali Private Limited. बेसिकली हम लोग काम करते हैं पूजा पूजा फ्लावर डिलीवरी करने की. अच्छा, हाँ. डेली यूज जो अभी लेडीज लोग पूजा कर रही हैं, फूल तोड़ने के लिए सुबह सुबह ट्रैवल करते हैं. हाँ. अभी हम लोग उन लोगों को एक डलिया बना के, डलिया थोड़ा एक भावनात्मक रूप से रिलेट करता है डलिया, तो इट्स कॉल्ड अ डलिया. वो डलिया हम लोग पहुंचाते हैं. आफ्टर दैट डलिया यूज होने के बाद वो हमारे पास उसका जो यूज फ्लावर है वो हमारा डस्टबिन रखता है, और हम उसको वेस्ट एज ए वेस्ट मैनेजमेंट यूज करके उसका अगर रोज है तो हम लोग गुलाब जल बनाते हैं, अन्यथा इंसेंस स्टिक यूज करें वेस्ट मैनेजमेंट. ओके ओके. अभी हम लोग 15 तारीख को इनोग्रेशन किया है. 15 दिन बाद मार्केट में 100 कस्टमर रीच किया है. अमेजिंग, कांग्रेट्स. तो मेरा और एक इंटेंशन ये था, जो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग इन बिहार, एंड आई ऑलवेज डू थिंग्स बिकॉज ऑफ पैशन ओनली. और मेरा ये मानना है जो हमारा जो यहाँ पे जो IQ लेवल या स्किल सेट ये सब जो है, इट्स वेरी प्रो इनोवेशन. We think very fast and we do a lot of things in a very intelligent way. It is just that the startup scene, right? Startup scene जो है, इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके बारे में हमें सोचना है. और ये जो है मैंने बाकी जो इकोसिस्टम में देखा है, और वहाँ पे जो कोलैबोरेशन है ना, बहुत अच्छा है. People from Bangalore, Delhi, Mumbai, and they collaborate very well and they help each other. तो वैसा कुछ हम कर सकते हैं. जैसे अगर हम लोग मतलब if you know anything about Patna and I want to do something here and I get connected to you, and then we'll move faster. If you want to do something in the metros and you get connected to us, then we'll move faster in that city. So that collaboration is required, and there has to be a platform where people will start talking about it. And it doesn't matter what product, सबका जर्नी सेम ही रहेगा. सबका मतलब वो एक हर एक का दिमाग में वो रहेगा जो यार मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या क्या जॉब कर लूँ क्या, या फिर यू विल हैव दोस काइंड ऑफ थिंकिंग, राइट? And anyone who is in this ecosystem, you will not get the right kind of support from a lot of people around you. Okay, so managing yourself, managing your own sanity and health, right, that is number one. And then understanding how to collaborate and get things done is the only way where we can scale. The support milna from family is very difficult. Yes, We expect yes sir. एंड यहाँ पे मतलब यहाँ क्या नेशनली एक ऐसा फीलिंग है जो नंबर 1 आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करो, नंबर 2 एक जॉब ज्वाइन करो, उसके बाद इनोवेशन इज नॉट कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनोवेशन में आपने भी काफी कुछ ट्राई किया होगा, आपने भी ट्राई किया होगा, 10 में से 8 चीज नहीं वर्कआउट होगा. दैट इज द रूल ऑफ द गेम. ओके,
और जो लोग हैं आपके आसपास में, उनको लगेगा यार ये हर चीज फेल करते जा रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है अभी तक ये। जब मैं स्टार्ट किया था उस टाइम स्टार्टिंग से पहले मैं दुबई में था, जॉब करता था बढ़िया अच्छा हाँ, खासा। आया मैं उधर, फिर मैं गया ही नहीं। हाँ। पापा कह रहे कर क्या रहे तू यार, इससे अच्छा खिला के जॉब कर वापस। तो ये सीन जो है ना, मतलब एटलीस्ट बिहार में हम लोगों को मिलके ही थोड़ा चेंज करना होगा, नहीं तो क्या होगा ना, वी विल बिकम आउटलायर एंड वी विल कीप फेलिंग। एंड अब हम लोगों को क्या है, जो अभी कुछ टाइम हो गया है, तो अभी हम लोगों को लगता है चलो ठीक है, लोग बोलते रहेंगे, बट इनिशियली मेनी पीपल विल गेट डिसहार्टेंड। काफी लोगों को स्टार्टिंग में ही, अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ ट्राई करेंगे तो उनको सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं मिलता है ना। और यही सीन मैंने देखा बाहर में क्या है, वहाँ पे कैंडी का एक शॉप लगा देंगे, मतलब अगर कोई लगाता है, उसके पेरेंट्स आके सपोर्ट करते हैं, आउटसाइड इंडिया रहे। तो ये इनोवेशन कल्चर नहीं है यहाँ पे, एंड वी हैव टू ड्राइव दैट इनोवेशन कल्चर इन वट एवर वे वी कैन। और ये अगर हो जाता है ना, जैसे अगर आपको बताता हूँ, यहाँ का अगर कुछ प्रोडक्ट है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें और आपके पास मार्केट। आज मैं मतलब एक होटल पे गया था खाना खाने के लिए, एंड द टेस्ट वाज अमेजिंग, जो खाने का टेस्ट था। और यहाँ का जो खाने का टेस्ट है वो मुझे बाहर नहीं मिलता है, द वे पीपल मेक फूड हियर, द स्पाइसेस, द वे दे हैव। अगर सिमिलर सेटअप पे अगर एक रेस्टोरेंट भी बाहर खुलता है, एंड इफ यू आर एबल टू मेंटेन द क्वालिटी, इट विल बी अ बिग हिट। The problem is that disconnect and the lack of networking that is there. So we should be doing that, and we have to get connected and help each other in terms of reaching out to multiple market. तो अभी मैं यहाँ पे अगर if you feel that हाँ, I feel the strength of this ecosystem is the product, and I also feel that the visibility is less. आज के डेट में जो विजिबिलिटी है बाकी स्टेट्स के जो प्रोडक्ट्स के और यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे का विजिबिलिटी थोड़ा कम है, एटलीस्ट इन द मेजर सिटीज। तो उसको ब्रिज कैसे, वो गैप कैसे ब्रिज कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट दैट। या इज इट फाइन नो? तो ये सब जो चीज है ना, यहाँ बाहर मैंने देखा है यार, स्टूडेंट मिलके ये सब कर लेते हैं। जो I'm working with Triple IT, and their network is brilliant. They're able to float. दूसरा बात दे दीजिए उनको, वो बोलेंगे तो सही रहेगा। इसका वास्तव ये हाँ सुना है। Yes. So moving to the next part, where do you think that we can collaborate and do something together? What kind Good afternoon, sir. Yeah. Sorry for disturb, sir. No मैं problem. सुनील, मेरा हाँ जी, बोलिए। स्टार्टअप है होम टू रीड के नाम से है। Okay. और मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल एकेडमिक नीड्स, चाहे वो कोर्सेज का हो, चाहे ट्रेनिंग का हो, या फिर एकेडमिक का हो। लेकिन मैं हेल्थ से काफी रिलेटेड हूँ, इन विच की हेल्थ में मेरा काफी रुझान रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम मिलेट्स कैफे स्टार्ट किया यहाँ पे, और मिलेट्स पे Okay. काफी काम किया हुआ है। तो Okay. हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मिलेट्स को लेके हर होटल्स में एक मिलेट्स कैफे का एक ब्रांच बना रहे हैं, जो कि 5 मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, जो कि काफी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और आने वाले दिन में सब लोग इसके ऊपर रहेंगे। तो इसके लिए सर, और दूसरी है कि मैंने फिटनेस का देखा है कि फिटनेस का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत अच्छा मार्केट है, और सबको Yes. जरूरत है। जैसा कि आपने भी बोला कि हर घर में 1-2 पेशेंट मिल जाने हैं हेल्थ फिटनेस के लिए। तो हमने इसके लिए एक फिटपार्ट स्टार्टअप मतलब रेडी किया, जो कि बैंगलोर एसटीपीआई से कोलैबोरेट किया है हमने। और हमने क्या किया कि ट्रेडिशनल जो बिहार के जो पुराने पद्धति थी, मेथड से इलाज करने की, उसको, और अभी तक के अप टू डेट जो रिसेंट हाई लेवल के जो ट्रेंड्स, तो हमने बहुत सारे टाइप्स मतलब कोलैबोरेशन किया है सबके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, सो दैट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कि हेल्थ फिटनेस में उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। चाहे वो रेकी से ठीक हो जाए, चाहे वो एक्यूप्रेशर से हो जाए, चाहे वो होम्योपैथी से हो जाए, चाहे वो मतलब जितने भी पुराने मेथड और नए मेथड्स को दोनों को एक कोलैबोरेट करके एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं।
इसमें हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। और मैं चाह रहा था कि ये स्टार्टअप मतलब इट्स नॉट ए स्टार्टअप, मतलब एक सोशल वर्क भी है कि हर को जरूरत है। दादी माँ के बिल्कुल। नुस्खे हैं, पुराने इलाज की मेथड्स है, वैद्याज का रिसर्च है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें कि हर चीज हो, नया भी हो पुराना भी। तो इस चीज को लेके एक फिटफैक्ट स्टार्टअप हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिला है, स्टार्टअप एसटीपीआई के साथ मिलके कर रहे हैं इसको। तो इसमें चाहेंगे कि सर आपके साथ कुछ गाइडलाइंस मिले बिल्कुल और बिल्कुल। कोलैबोरेशन करें। तो ये जो मिलेट्स का आपने बोला ना, वो काफी अच्छा एरिया है। हेलो, जी सर। आवाज आ रहा? हाँ आ रही है, आ रही है। माइक है वहाँ पे। अभी आ रहा है? हाँ, ओके। तो मिलेट्स का तो अगर आप 50-60 साल पहले देखो, बिहार में जी मैक्सिमम लोग मिलेट्स ही खाते थे, है ना? जी और जी मैंने ये रियलाइज किया, जो वीट ऑन राइस से जो प्रॉब्लम है, 10 साल पहले मैं एक इजरायली साइंटिस्ट से मिला था। ही गेव मी दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक. So I ओके don't eat weekend rice, and it has been 9 years now. Okay, so occasionally I eat millets, and I tell the same thing to people. And अभी क्या है, जो धीरे धीरे लोगों का अवेयरनेस लेवल भी बढ़ रहा है, जो मिलेट्स के बारे में ज्यादा जान रहे हैं, और डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं इनफैक्ट इट इज गुड फॉर सॉइल आल्सो. तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉज. एंड वो उस पर आप कीजिए. इनफैक्ट वो अगर बस मिलेट्स का ये जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो ना, अगर उसको जी एक कोड लेकर आप लॉन्च करते हो, or parallelly if you are able to give health tips to people, that's a very strong market. So whatever help you need from me, please let me know. We work with a lot of schools in Pune, Mumbai and Hyderabad. So any kind of support you need, we will be able to do it. And in fact, we can share our experiences also, whatever we had in whatever campaign we did with the government of Maharashtra. Based on that, if you want to collaborate and do something with the government of Bihar, यहाँ पे जी across all schools, then we can do that. And दो strong market रहता है इसमें, एक schools और corporates, where people are more aware about I mean they want to do more things to improve their health. तो ये दो अगर सेक्टर है, अगर आपको लगता है जो दोनों में कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट स्कूल आल्सो इज गुड एनफ. ओके सर। हेलो, अभी क्या? मेरा स्टार्टअप भी है देसी मार्ट के नाम से भी हब में, और मिलेट्स पर ही अच्छा, सर हाँ. यहाँ पर हेलो सर। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। तो काफी अच्छा चल रहा है, रिस्पांस भी अच्छा है। गवर्नमेंट में हमने कैंटीन भी खोले हैं, बिहार गवर्नमेंट में, जहाँ पर ये कैंटीन के थ्रू सर्व कर रहे हैं। ओके सर, थैंक अभी यू। हेलो सर। अभी जो मैक्सिमम हेलो सर। इश्यूज, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए और एक कैंपेन आप प्लान कीजिए, करते हैं कुछ. ओके सर, ओके सर। हेलो सर। क्या है? हेलो सर, फास्ट सेवा। हाय. गुड इवनिंग सर एंड ऑल ऑफ यू। सर, हमारा कंपनी है 2013 में एस्टेब्लिश्ड है, फास्ट सेवा के नाम से। अब ई बिल्डर हैं सर, और जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे घर बनाना है तो विथ मटेरियल, विदाउट मटेरियल, और जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और मटेरियल है सबको एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं सर। हमारा जो ब्रांड है वो फास्ट सेवा है, और फास्ट सेवा फैसिलिटीज जो है ट्रेडमार्क वो हमारा रजिस्टर हो गया है अच्छा, अभी सर। जी। ग्रेट थोड़ा ग्रेट. गाइडलाइन चाहिए तो था सर आपसे। मैं काफी कोशिश नेटवर्क इसको चलते मैं जुड़ नहीं पा रहा था। तो आपका जो मार्केट है, वो कौन सा मार्केट है? पटना में ही है या फिर? पटना, नालंदा और जहानाबाद, 3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो लोकल। अच्छा. हाँ, तो उसमें क्या, किस टाइप का आपको गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए? सर गाइडेंस, जैसे अभी हम लोग इस फील्ड में हैं और तो नए नए हैं, तो हमें आपसे जो भी गाइडलाइंस मिल सकता है सर, चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग या कुछ भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, कब स्टार्ट किया आपने? सर स्ट्रगल के दौरान 2013 से स्टार्ट किए थे, जब पिताजी डेथ किए थे तब से। लेकिन ऐसे 2017 18 में यहाँ गवर्नमेंट से जुड़े, फिर 21 में CIMP इंक्यूबेशन मिला, वहाँ 1.5 साल हमारा चला
6 प्रेजेंटेशन हुआ है, वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ था, फिर चेंज हो गया पॉलिसी बिहार का, 2022 आया, फिर वहां से बिहार स्टार्टअप सर्टिफाइड हुआ हमारा। तो अभी सर अच्छा, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो बाकी तो आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल ही जाएगा, कैसे फंड रेज करना है, कैसे मार्केट में जाना है, बहुत सारा easy। सपोर्ट। लेकिन बस जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना, वो खुद को मैनेज करना। जो डिसअपॉइंटमेंट्स और जो रिजेक्शंस है वो मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर और जनरली क्या रहता है, जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं ना, उसके आसपास बहुत ही कम लोग रहते हैं जो इस फील्ड से रहते हैं। जो जी जब मैं कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हुआ था, उससे पहले शायद जी मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से एक या दो कुछ समझ पाएंगे जो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जी आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद अदर फाउंडर्स एंड जी बिल्ड अ गुड सपोर्ट सिस्टम। और आपके जी फैमिली से अगर सपोर्ट है तो अच्छा है। लेकिन हाँ, ये कैसे रेज करना है बिजनेस को, उसके अलावा आपका जो your own health and stability of your mind is very important. तो मैं जी सबसे पहले तो लोगों को ये बोलता हूँ, जितने भी फाउंडर्स हैं ना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। जी ये आप इंश्योर करो जो आप यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड यू आर फ्रेश within, जी and for that जी definitely your nutrition and movement is very important. जी Apart from managing yourself, then yeah, if you need any connect with a good ecosystem, जैसे अगर आपको and relying on just one kind of customer is very difficult sometimes when policy changes and all. Then you have to have an alternative. So जी maybe reach out to other places also where you can service। अगर आपको लगता है जो हाँ एक और दो मार्केट डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे जी थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट होगा, तो बेटर जी रहेगा। जी सर डेफिनेटली फंड। वो जी मैं एक्सटेंड करने की कोशिश में हूँ सर। जैसे स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पहले गया था, तो वहाँ पे थोड़ी सप्लाई में डिले हुई, और जो हमारा प्रोजेक्ट सीआईएमपी से अप्रूव्ड हुआ था, तो थोड़ा जो पॉलिसी बिहार स्टार्टअप का चेंज हुआ, तो उस दौरान जो ग्राउंड पे समस्या आया कि जो मटेरियल वो तेजी से निकल नहीं रहे थे, तो वहाँ से अच्छा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का डिमांड आया, तो वो मैंने इसमें ऐड करा। फिर जब कम्प्लीटली दोनों के साथ चल रहा था, तो फाइनली मैंने ये जो पहले तो मैं बिल्डर कोई और था, मकान सर्विसेज हम देते थे, लेकिन अब फाइनली अच्छा, सर उस पे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया कि कोई भी मकान हो नीचे से ऊपर तक हम कंप्लीट बनाते हैं सर। तो अभी सर अच्छा, दिक्कत इसमें जो आ रही है वो एक्सपेंशन के बारे में, जैसे आपने अभी बताया सर कि दूसरे सिटी में improve करें, तो उसमें थोड़ा सा गाइडलाइन आपका चाहिए कि जैसे हम एक्सपेंस करते हैं तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, मेरा एक कोऑर्डिनेट्स नोट कर लीजिए। जी लिंक्डइन के थ्रू एक बार मुझे अपना जो कंपनी है ना उसका डिटेल्स भेजिए। फिर मैं जी इंटरेक्ट करता हूँ आपसे। अगर जैसे अगर जी आपको इंटरेस्ट है दूसरे मार्केट में या फिर कुछ और टाइप का सपोर्ट अगर आपको चाहिए, रियल एस्टेट तो हर जगह ही अच्छा चल रहा है आजकल, जी तो ज़्यादा कंपनी सर, प्रॉब्लम। कंपनी कंपनी का नाम है सर हमारा झाजी फास्ट सेवा ई फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड। और सर इसका एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है फास्ट सेवा फैसिलिटीज के नाम से, और वेबसाइट है सर fastsewa.com। ठीक है। तो एक बार आप मुझे लिंक्डइन पे भी अगर आप हैं, ऋषिकेश कुमार के नाम से आप सर्च कीजिए, अगर वो मुझे एक बार मैसेज कर देंगे ना, तो और वो ये भी लिख दीजिएगा अगर किस टाइप का सपोर्ट चाहिए हो, अगर मेरे इकोसिस्टम में अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूंगा। जी सर, ऋषिकेश कुमार सर। हाँ जी, हाँ, और इंस्टाग्राम में भी x डॉट ऋषि के नाम से है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। जी सर। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? Any more questions online? Sir, I have a question. यस, या प्लीज। As you said कि आपने काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ बैंक कोलैबोरेशन भी किया है। सो जैसे कि हमारा जो सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या फिर करेंट का प्रोडक्ट क्वालिटी और टेस्ट उसका और किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं? हमने CFTRI के साथ काम किया है, मैसूर बेस्ड है, वो काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ नंबर 1 इन इंडिया राइट नाउ। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस है, बट आई मीन जो आप प्रोडक्ट बता रहे हो फ्लेवर्ड वाटर का, तो एक प्रोजेक्ट वहाँ पे भी मैंने देखा था, आई थिंक 2 साल पहले। If you reach out to, if you want me to help you out to connect with them, I can do that. Yeah. So and then when you become part of that ecosystem, then you'll get to know more, as in how to have the right kind of saturated requirements and how to have the right kind of packaging.
वो सभी इम्पोर्टेंट रहता है. They will also share the problem that they faced. So how can I collaborate? I can connect you with them. You can just drop me a message. I can connect you with them. What is the institute name? CFTRI. CFTR. Yes, yeah. Mysore. Mysore, yes. So there is one institute, research institute in Mumbai also. There is ICT Mumbai, Okay. Institute of Chemical Technology, I guess. Okay. So they are also doing very good in this field. Okay. So if you have connection in ICT Mumbai, I can find out. I can get you connected. But I have worked with CFTRI, so there it'll be faster. But you reach out to both. Okay. That's not a problem. So, CFTRI is for food research, Food. yeah, Food. especially for food. Yes, and it's a government organization, so the entire fees and everything or whatever cost is involved, that is very less. Yeah. so they also collaborate with other startups like in product development or Yes, yeah. Their goal is to help people launch products in the market. So they have companies who are working with them. Apart from that, there are people who want to launch their product so also. they have facilities like pilot production. Yes, they have huge facilities. Huge. You should just check about them. Like, Okay, it's okay. like huge. In Mysore, they are one of the largest organization. There is one more question online. So the other thing that I have seen in other startups ecosystem people doing, right? They support each other very aggressively. Okay, very aggressive. Sir, Yes, yeah. sir, one question. Yeah. Sir, I want to make a fast seva group. जैसे as example, our first startup is related to real estate. Then startup I will start soon from education. So sir, what type of instruction from your side I can yeah, the instruction for me for favorable मुझे समझ from में नहीं my आया, part. आपका आवाज ब्रेक हो रहा था. जैसे सर मेरा एक स्टार्टअप है जिसके बारे में आपसे जिक्र हुआ. हाँ. दूसरा स्टार्टअप जो एजुकेशन से संबंधित है तो उसको मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. तो सर उसके रिगार्डिंग मुझे क्या जानकारी रखनी चाहिए और क्या मतलब सर जो एडवाइस आपके तरफ से मुझे इस टॉपिक पे चाहिए सर. देखिए वो आपका प्रोडक्ट क्या है. any product that we generally have, it should solve a problem generally. एजुकेशन सर, एजुकेशन में एडटेक स्टार्टअप. हाँ, तो ये एक बहुत ही ब्रॉड प्रॉब्लम है. इसमें जैसे अगर मैं एजुकेशन में देखूं तो हजारों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. उसमें आप एक प्रॉब्लम को हाईलाइट कीजिए और क्या हो सकता है वो आपको ज्यादा पता रहेगा. तो आप उसको लेकर उसके अराउंड अगर आप पूरा अपना सोल्यूशन बिल्ड करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट पॉइंटेड फीडबैक. नहीं सर, प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं. जैसे एक स्टार्टअप अगर दो के साथ दो तरह के स्टार्ट करता है तो उसमें उसे कोई दिक्कत होती है क्या गवर्नमेंट के साइड से या अभी हाँ, अगर आप दो कंपनी रन कर रहे हैं तो दो प्रॉब्लम हो सकती है. एक तो आपका फोकस और आपका बैंडविड्थ है ना. आपको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो. काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं कर पाते, तो वो एक प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम ये है जो अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करते हो तो उस केस में आपको क्लियर रहना होगा जो आप क्यों कर रहे हो ये दो. और जैसे अगर किसी को फास्ट सेवा में अगर इन्वेस्ट करना है और उसको आप बताओगे जो मैं दो कंपनी कर रहा हूँ तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम हो सकता है. बट इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई. जी सर, जैसे जस्टिफाई मैं ये कर रहा था कि जैसे स्ट्रगल के टाइम पे जो मेरे अर्निंग का साधन था वो दो तरीके था. ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे वो, और दूसरा जो मैं पढ़ाता था वो, दो तरीके थे. तो मैंने इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए दोनों डाला था. तो एक जो एजुकेशन वाला था वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए, और सीआईएमपी में मेरा जो रॉ मटेरियल का वो सिलेक्ट हुआ था. तो आईआईटी की तरफ से मुझे कोई कॉल आया नहीं, सीआईएमपी की तरफ से आया तो मैं इधर जुड़ करके ये निकला. बाद में मुझे पता चला कि आप खुद चेक कर सकते हो. जब चेक किया, कांटेक्ट किया हमने नंबर पे, तो बोले कि बहुत बार कॉल आपको किया गया, मेल किया गया,
लेकिन मेरे साइड पे कुछ आया नहीं। तो जो मेरा एक साइड था वो एक मिस हुआ था। मैं इसमें तो मैं मतलब अपना सेटलमेंट लगभग कर लिया हूँ। लेकिन जैसे एजुकेशन एक फील्ड है जिसमें काफी इंटरेस्ट है हमारा, तो ये नहीं कि एक ही टीम दोनों में इन्वॉल्व रहेगा। जैसे टीम तो हमारे हैं, जो हमारे मित्र सब हैं, तो टीम है हमारे पास, बस उसको स्टार्ट करके वो अलग अलग टीम है, दोनों दोनों से मतलब ये आपस में कोरिलेट नहीं है सर। नहीं तो आप कीजिए, अगर आपको लग रहा है जो यू आर कंफर्टेबल डूइंग बोथ, इट्स फाइन। आई मीन देयर आर मेनी पीपल हु हैव मल्टीपल बिजनेसेस, तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम नहीं रहता जो हाँ अगर आप 2-3 बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। बट जनरली व्हाट वी हैव सीन इज व्हेन स्टार्टअप्स आर at a startup stage, right? The founders have very limited time and limited resource, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो सारा फोकस एक चीज में डालते हैं। वो जनरली देखा है मैंने, बट दैट डजंट मीन दैट देयर आर पीपल हु कैन नॉट डू 2-3 businesses. So it depends on your personality and your way of working. You can be able to manage multiple businesses or you can start slogging. So आप खुद से पूछिए, अगर आप नहीं दोनों सर, मैनेज मैं तो आराम से, मैं तो ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस हूँ सर, क्योंकि जो स्ट्रगल के टाइम में जहाँ पे पैसों की जरूरत थी, जहाँ जहाँ एक एक रुपए के मोहताज था, ये दोनों सेक्टर में काफी सपोर्ट किया। जैसे मैं ट्यूशन जो भी था वो चलता था सुबह से लेकर के शाम तक। बाद वो सारी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का था वो काम करता था। तो इसके साथ दोनों एडजस्ट करते हुए चला हूँ। तो ये इंटरेस्टेड, दोनों काफी ज्यादा इंटायर इंटरेस्टेड है इसमें सर। तो मैं यही इसलिए पूछ रहा था कि जैसे मैंने एक स्टार्ट में इन्वॉल्व हूँ, दूसरे अगर स्टार्टअप करता हूँ, तो गवर्नमेंट साइड से तो किसी तरह का कोई एक्शन या ऐसा कुछ तो बात है कि मैनेज कर सकते हैं, या फिर वैसा कुछ एक्शन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं नहीं, देखिए अभी एज अ फाउंडर, एज अ डायरेक्टर, यू कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल कंपनीज। अभी आपका जो लाइफ है, आपका जो कंपनी है, वो आपको ही रन करना है। कोई भी आएगा, मैं या कोई भी और, वो आपको गाइडेंस देगा तो वो भी एक 1 to 2% ही वैल्यू रखता है। क्योंकि हम लोग 2 मिनट के डिस्कशन में आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपका सोल्यूशन है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर कोई बोलता भी है, गाइडेंस देता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई बोलता है जो आपको एक एक बंद कर दो, या तो दो चलाओ या 3 चलाओ, दैट इज ऑल लाइक very superficial information that we have. So जी I think whatever works better for you. अगर आपको लग रहा है जो 2 कंपनी आप रन कर रहे हो और दोनों कंपनी आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो आप कीजिए। वो सबसे, एक किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का जो मेन गोल रहता है वो सर्वाइवल होता है। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो फिर और कुछ, सब कुछ बेकार है। अब उसके लिए आपको, काफी लोग क्या करते हैं, जो उनका एक मेन प्रोडक्ट रहता है, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ जो हाँ वी विल इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी से मैं सोच रहा हूँ जो आगे जाके कुछ मिलियन स्टूडेंट्स उस पर रहेंगे या कुछ करोड़ फैमिलीज रहेगा, वो सब है मेरे दिमाग में। But to do जी that, we have to continue doing some other things also, like services, right? जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, तो वहां पे रेवेन्यू आ रहा है। अब वी आर गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम देयर एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। अब मैं यस सर। कोई अगर किसी में भी बात करता हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे जो दोनों मत करो, कुछ लोग बोलेंगे जो दोनों करो। ठीक है, they'll have some information, some guidance they'll give, but I have to manage my funds such that even if we don't get investors, our business should be able to support future growth. So no one will know better than you, that is for sure. तो आपको जो लगता है, जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, आप कीजिए विद इन द लीगल बाउंड्रीज ऑब्वियसली। जी जी सर। मतलब द मेन पोर्शन ऑफ डिस्कशन इज सर्वाइवल। क्या श्योर। Any more questions online? थैंक यू, थैंक यू फॉर गाइडलाइन सर। बहुत बहुत Thank you. वेरी वेरी थैंक यू सर। Or questions? We are to the end of the Yeah. question. So the other thing we wanted to talk about, what like sir mentioned, was to discuss about the product market fit. जैसे काफी वक्त हमें ऐसा लगता है जो हमारा प्रोडक्ट रेडी है, और काफी वक्त हम ये सोचते हैं जो हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी सॉल्व कर रहा हूँ। और एज अ फाउंडर मुझे भी वो होता है, जो मैं अगर कुछ बना रहा हूँ तो आई ऑलवेज लुक एट द ब्राइटेस्ट साइड। ये बन जाने से मतलब 100 कस्टमर तो आ जाएंगे। अभी मैंने एक्चुअली एक रेडी कर रहा हूँ पे हनी एंड इट्स एनर्जी ड्रिंक, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, हनी एनर्जी ड्रिंक। लेकिन उसका मार्केट मुझे यहाँ पे नहीं दिखा कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो हाई जा रही है। तो
अब ये समझ नहीं में आया था, प्रोडक्ट तो मैंने बना लिया, अब मैं यहाँ पे उधार दूंगा, लेकिन अब कोई उठाएगा ही नहीं। लेकिन इसका भी जो मतलब बाहर के कंट्रीज, जहाँ तक मैं दुबई में था तो वहाँ पे वो चीज मैंने देखी थी, अच्छा डिमांड है, लेकिन प्राइसिंग वहाँ पे हाई है, लोग देने के लिए तैयार है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम। ये हमेशा रहता है बस, क्योंकि अभी आपने जिसको देखा जो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे आपको किसी ने बोला जो मुझे एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए जिसमें मतलब थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, आप बात करो लोगों से जाके, 100 लोगों से जाके बात करो, अगर वो बोलते जो हाँ चाहिए तो फिर वो प्राइसिंग का थोड़ा सा वो रहता है जो हाँ थोड़ा कम में कर दे, अगर 10% मार्जिन पे बेच दो, सो दैट इज इन योर कंट्रोल. But if you go out in the market, and that is a spot that we have to, as founders, we have to deal with that blind spot where we build product. हम बना रहे सडनली बन गया, उसके बाद क्या करें, है ना? अभी जाके हम लोगों को बोलते हैं, वो फिर बोलता है जो यार ये तो बहुत महंगा है. अब आप कैलकुलेट करोगे आपका कॉस्ट, तो मान लो 100 रुपया होता है तो आप 110 में तो बेचोगे उसको. सेम प्रोडक्ट सेम प्रॉब्लम अभी मेरे इसमें आया, मैंने एक हनी आंवला मुरब्बा तैयार किया था। हाँ. अब उसमें मैंने डाला कश्मीरी हनी, कश्मीरी हनी डाला तो रेट स्लाइटली अप हो गया, तो अब कुछ लोगों को पसंद भी बहुत आया, लेकिन आपको मार्केट में का मालूम है, यहाँ पे प्राइस देने के लिए बहुत कम लोग तैयार हो पाते, तो फिर मैंने उसको फिर नॉर्मल हनी में डिप किया। नॉर्मल हनी में डिप करके प्राइस तो डाउन हो गया, लेकिन फिर भी लोग जो शुगर वाला मिल रहा है उसके कंपेयर में वो प्रेफर नहीं कर रहे। मैं तो एक स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप मार्केट थोड़ा ओपन रखो. आप मार्केट ओपन रखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो एज अ स्टार्टअप जो आपको मार्जिन चाहिए वो बहुत ही फाइट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी मेजर कंपनीज हैं और उनका जो प्रोडक्ट रहता है वैल्यू प्रोडक्ट विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, दे हैव मार्केट like UP, Bihar, West Bengal and these sectors, and the price will be very low. अब प्राइस उनका जो कॉस्ट एफिशिएंसी है बहुत हाई रहता है. अगर HUL या ITC कुछ प्रोडक्ट बनाती तो उनका कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत हाई रहता है. वो 2 रुपया का रॉ मटेरियल रहेगा, इसमें 1 रुपया का उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, 3 रुपया में बेच सकते हैं. वो कॉस्ट जो रहेगा आपका 2 रुपया का, वो अगर सेम कश्मीरी हनी खरीदेंगे, आप खरीदोगे 100 रुपया में, उन लोग खरीदेंगे 40 रुपया में, 50 रुपया में. तो ऑलरेडी वो उनका जो कॉस्ट एफिशिएंसी है बहुत हाई रहेगा. तो एज अ स्टार्टअप आपका डिफरेंशिएशन क्वालिटी या फिर टू सॉल्व अ यूनिक प्रॉब्लम जो मार्केट में अभी नहीं है, जो प्रोडक्ट, अगर उस पर आप फोकस करते हो तो आपका जो इनिशियल ट्रैक्शन है वो आप बिल्ड कर सकते हो. अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो जहाँ हो रहा है वहाँ देखो. अगर आपने देखा जो ये प्रॉब्लम दुबई में है तो आप दुबई में लॉन्च करो. दुबई में क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो? तो बेसिकली यही है ना, हम लोग जनरली क्या रहता है, जो हम लोग बना लेते हैं प्रोडक्ट और फिर हम देखते हैं हमारे आसपास हम कैसे बेचें, लेकिन जरूरत नहीं है. मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से आप दुबई में बेचोगे तो मार्जिन इज ह्यूज. हाँ, एक्चुअली मैंने हनी ऑलरेडी इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लो आएगा. हाँ, अगर कोई नो ब्रेनर अगर आप लेते हो, ठीक है, अगर मैं सोचूं जो हाँ क्या करना चाहिए मुझे, मैं सीधा सीधा सोचूंगा जो हाँ मुझे प्रोडक्ट यहाँ बनाना है और एक्सपोर्ट करना, सिंपल. क्योंकि कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगर आप थोड़ा सा स्केल पे जाओ, और मैन पावर कॉस्ट बिहार में बहुत अच्छा है. अब इसके ऊपर आपको मतलब जो मार्जिन चाहिए तो ऐसा जगह देखो जहाँ पे बेस्ट है. कैन यू टेक वन? आपको भेज दूंगा वैसे. हाँ. So and we have to find out ways and avenues to reach those markets. तो अगर आप दुबई का बात कर रहे हो ना, या फिर न्यूयॉर्क का बात कर रहे हो, वहां पे अगर रिक्वायरमेंट है, एनीथिंग इज फाइन. सो I think those are the ecosystems where you can get connected, and that is how you can raise funds also. अगर यहाँ का जो, अगर आप हनी बोल रहे हो या फिर एक और भी है अपना कुर्थी एक होता है नहीं, हाँ, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, वो बहुत ही अच्छा है वो प्रोडक्ट. अगर वो उसका जो कम्युनिकेशन है, अगर जैसा कम्युनिकेशन डेवलप्ड मार्केट में चाहिए, इन द राइट काइंड ऑफ वीडियो फॉर्मेट, इन द राइट काइंड ऑफ पॉडकास्ट फॉर्मेट, if you tell them that this is what is required to improve these problems, then they will buy. Purchasing power का प्रॉब्लम नहीं है नेशनली और इंटरनेशनली भी.
बस यही है जो, हाँ, दे शुड नो। अगर मैं उनको, जो सत्तू है, अगर सत्तू उनको आप बेसिकली ऐसे दे दो, सत्तू है लीजिए पीजिए, तो फिर कुछ नहीं है। बट उनको अगर बताओ जो हाँ ये सत्तू है और उसमें ये बेनिफिट है, और आपको सॉफ्ट ड्रिंक क्यों अवॉइड करना चाहिए और सत्तू क्यों पीना चाहिए, देन देर इज a huge potential. In fact, I think every school we are trying to promote this, that ask in a better way, ask kids not to take any of those sugary drink and go for drink like sattu, जिसमें अभी न्यूट्रिशनल में हमने देखा है जो प्रोटीन का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहता है, और दिस इज अ वेरी इजी वे टू फिक्स इट एंड अ वेरी कन्वीनियंट फूड। तो आप तो ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ जो आप ऐसा मार्केट देखो जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का डिमांड। हाँ, ब्रांडिंग पे थोड़ा सा फोकस करो, ब्रांडिंग के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हाँ। अभी मेरा जो मेन मार्केट है ना वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल में जा रहा है। ब्रांडिंग हमारा जो रिटेल खुद की ब्रांडिंग में बहुत कम है। हाँ, तो आपका जो यूनिकनेस है वो ब्रांडिंग की तरफ ही आए। अगर एक स्टोरी, सी हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी रहता है। आपके पीछे भी, वो प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है। इफ दे नो दैट हाँ ही इज द पर्सन हु इज मेकिंग दिस प्रोडक्ट विच विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकर्स। अभी यहाँ पे मतलब जितने भी फाउंडर्स हैं जिन्होंने D2C प्रोडक्ट्स बनाया है, तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरी। मामा अर्थ क्या है, सेम ही है, or any other product which has gone big. Branding is a very critical element which is missing in most of the startups. Branding and communication. So मुझे लगता है आपका जो मार्केट है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। यूपी बिहार इज द रिचेस्ट बेल्ट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग, Any tips for branding? Like as you mentioned, many of us. yeah, branding is my favorite part. I mean, I was into marketing and I was managing branding in my companies also. So branding, it has to be elegant, as in the sense, आपका अगर product है ना, वो देख के लोगों को लगना चाहिए जो यार ये चाहिए मुझे। And for that you have to keep things very simple yet elegant. जैसे अगर आपका product लो सॉफ्टवेयर का, you can develop a website, okay, for 10,000 also, and you can develop the website for 1 lakh also. And it's not that you have to develop a very expensive website, but everything has to be planned according to your brand theme. जैसे अगर आपको लग रहा है जैसे आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रहा है वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, then use some corporate color and use it throughout. That is a very simple way to talk about branding. But branding is basically a way to communicate to your customer that this is high quality product. So for startups, it is very important for the founders to get involved in the branding aspect. ये आप outsource नहीं कर सकते. I got involved to such an extent that I can design creatives, I can edit videos myself now. Not that I knew earlier, but now because there were certain things in my mind, मुझे लग रहा था जो हाँ इसको ऐसे करना चाहिए, and I was not able to communicate, and that was my problem. So then I sat and then I learned and then I started working with creative design to develop some designs. Not that we are the one of the best in terms of branding, but involvement I'm talking about. So don't neglect branding. अगर आपका market other countries have, then it is a different level. Even if you are trying to reach out to developed markets, then you have to invest. Invest not in terms of just money, but that your focus, that हाँ ये अगर है ये कलर क्यों है, ये अगर डिजाइन ऐसा है तो ऐसा क्यों है, and then use the standard that people use for bigger companies. There are some companies who are doing very good in branding. आप उनका देखो. Some are very colorful, some are very simple, low color, but it tells a story. तो जनरली engineers या फिर यहाँ पे branding का उतना कुछ हो रहता नहीं. And that is something which has to be there for all companies. In fact, all founders have to talk about their brand in their own way. And the easiest right now is to talk on Instagram, make videos, put it on Instagram. That has become a necessity. अब वो ऐसा नहीं है जो वो अगर पहले था जो ये सब टाइम पास है, ये फोन देखता है, लेकिन आजकल आप देखोगे all the big guys, all the founders,
they have started talking on Instagram about their product. Initially लोग काफी लोगों को comfortable नहीं रहता, then people will laugh at them, but founders तो you know how to deal with that, right? बेशरम लोग हो जाते हैं 1-2 साल में, तो हंसने वाले हंसते रहेंगे, लेकिन आप करते रहो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बस जो 1-2 प्रोडक्ट 10 मिनट कन्वर्सेशन में अपना कितना ब्रांडिंग कर जाता है वो। हाँ, तो अगर यही जो भी आप बना रहे हो अपने लैंग्वेज में आप डालते रहो, कितने लोग जो अभी जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे हैव बिकम सो वायरल एंड दे हैव बिकम अ नेशनल ब्रांड। तो आप बात सिंपल, और इसमें कुछ खर्च नहीं है। अभी अभी तो मुझे लगता है जो ये एक बहुत ही इजी वे है, इट्स अ वेरी इजी वे टू कम्युनिकेट टू योर कस्टमर्स डायरेक्टली। तो ये तो अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करो, यू शुड टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट। फोन से ही वीडियो ले लो और कर लो। सर इंस्टा आईडी क्या है आपका? x.rishi। x.rishi। हाँ, लिंक्डइन ऋषिकेश कुमार। और अभी यहाँ पे 10-12 फाउंडर्स हैं इन दिस रूम राइट नाउ। अगर आप अपने अपने ग्रुप में ही जस्ट रिपोस्ट ही कर दोगे ना, तो मार्केट बेस सबका बढ़ जाता है 12 टाइम्स जस्ट इन योर ग्रुप। यस यार, 21.3 yeah, so I keep posting every day whatever small little things. This would be a fruitful conversation for everyone. थैंक यू नहीं, आपस में हम लोग को हेल्प करके ग्रो करना है, क्योंकि वो इजीएस्ट है, सबसे इजी है। We can conclude the session today. Yeah, sure. Thanks a lot for joining. And I wanted to develop this relationship so that I can understand what I can bring to Patna, what I can talk about in other places about the products of this place. And then please reach out. And anything that you need, at least in Hyderabad, Mumbai, Pune kind of market, please let me know. I will be able to connect with you and share the other details if you want to launch something. Yeah. Thank you so much. I think that's Okay. very helpful. The people on the other side can talk about it. That's how ecosystem works. Yeah. Thanks to the online participants. Thank you so much. Thank you everyone for joining. End कर दो। Yes.